power and enthusiasm. Just see अगर आप ये दिखा सकें किस तरीके की लाइनें वहाँ लगी हुई हैं. और be it the valley of Srinagar, be it the under the trees of Chinar, be it the high mountains, peaks from where the calls used to come for disruption. Everywhere there are people around, long queues since morning, and even in areas where there used to be calls for boycott, there is an enthusiasm. People are giving a statement, a running statement, a standing ovation to the democracy, to the Jamhuriyat by standing so peacefully in the queues, waiting for their turn. And this is what is the history in making in J&K. It's a real history. It's for the world to see that how the elections can take place in peacefully, in a very peaceful, fair, absolutely inducement-free manner. We challenge that anyone. And today there are a large number of diplomats also around in the area from different countries to see for themselves freely as to what is happening in the J&K, and it's state after state it is happening. It happened in every state. It happened in the LWE areas in the general election. It happened in entire northeast. It happened everywhere. Wherever there were the fissures, wherever there were the possibilities of conflict, people are now, since the 2024 election or even before, when the Chhattisgarh election took place, assembly elections, people are now making a statement that it is not through the ballot, it is through the bullet that they believe in. They believe in writing their own history, their own destiny they want to write themselves. They want to be participative in that. And this is what is an environment. These are what are the visuals to be seen, to be believed, and to be celebrated as a festival of democracy world over. They are creating, see the crowd, so peaceful, and the shine in their eyes, as if they are waiting for their own history to be written by themselves. So this is what it is. We showed you, we gave a glimpse of what we do whole day here during the election day. We have started this practice very recently. We called you during counting times in counting day in the 2024 election, and this is what we are showing you live today. That's all we have to say. Rajiv sir, what do you want to respond? Because in UNGA, sir, President Biden also applauded the election process and the way Election Commission is conducting the elections here in India. How would you like to respond? Because when the other political leaders go to US, they criticize our country. On the one side, President Biden is himself applauding the election process. See, in the elections, Indian elections, we are very precisely, we only do three things. What we do? We make the electoral roll free and fair. That is one job we have. Second job we have is to provide a level playing field during the campaigning, make it far less cluttered, inducement free. And thirdly, we make it comfortable when the people come to vote. This is what it is. And what does it create? It creates only trust in the Election Commission. That's all. So we are in the business of creating trust and not defeating the trust at any point of time. In 2024 general elections, in various other state elections in last 2-3 years, and always, and more particularly, in areas as I mentioned where there were conflicts, all is getting resolved through democratic process, and this is creating democratic surpluses for the world as a whole, for the democratic countries as a whole. Wherever there are democratic kind of a recession or a democratic kind of a not that strong a functioning because of variety of reasons, we are proving in this country through the Election Commission and ultimately through the voters who have the trust in Election Commission. Our voter is really the king. He decides. Nobody else decides, and this is the trust, and we are creating democratic surpluses for it. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं उमर अब्दुल्ला, उनसे पूछा गया कि यूएन के लोग आए हैं, प्रतिनिधि आए हैं, वो देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि गाइडेड टूर कराया जा रहा है, लेकिन जो फॉरेन जर्नलिस्ट थे उनको कवरेज के लिए पासेज इस बार नहीं दिए गए और जनता अपने आप से चुनाव लड़ रही है, इसको क्रेडिट लेने की किसी को जरूरत नहीं है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं चुनाव। अच्छी बात है, जनता लड़े,
यही मैंने पहले कहा कि ये जनता का चुनाव है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का चुनाव ही नहीं है, ये सिर्फ भागीदारी का चुनाव है, जमहूरियत का चुनाव है और हमें आउटकम से मतलब होना चाहिए। अगर जनता अपने से वोट देने आगे आ रही है और वोट दे रही है तो इससे अच्छी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इलेक्शन। आउटकम इज व्हाट मेजर्स। जैसे मैं बोलता हूँ अक्सर कि परिणाम में ही प्रमाण है। अगर लोग वोट देने आ रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, पीसफुली दे रहे हैं, बस ठीक है, हमारा इलेक्शन बढ़िया है। सर, जितनी तेजी के साथ चुनाव में मतदान हो रहा है, जितनी तेजी के साथ चुनाव में मतदान हुआ है, पहले भी चुनाव में देखा और इससे पहले हम जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव देखते रहे हैं, लेकिन इतनी तेजी के साथ मतदान नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि लोग अपना गुस्सा मतदान के जरिए, जिस तरह से वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि मतदान के जरिए वहाँ के लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं सरकार के प्रति, इसको पॉजिटिवली देखने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी उम्मीदें जाहिर कर रहे हैं, अपनी आशाएं जाहिर कर रहे हैं, अपनी तदबीर ताकीद खुद से खुद लिखना चाहते हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं। देयर एस्पिरेशंस, देयर होप्स, देयर एंथुजियाज्म, दैट इज व्हाट दे वांट टू रिफ्लेक्ट थ्रू दिस। व्हाटएवर इट इज कंपोज्ड ऑफ, दे सेइंग वी विल टेक कमांड, वी विल डिसाइड, वी विल वोट फॉर द गवर्नमेंट वी वोट। आपको भरोसा था चुनाव से पहले, जिसमें तैयारी जितना लंबा समय लगा चुनाव कराने में, इस तरह से इतना पीसफुल चुनाव हो पाएगा, इसका भरोसा था और इस लेवल पे पोलिंग परसेंटेज आएगा। तो आप ये सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जहां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार मीडिया से रूबरू हो रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से खुलकर जम्मू कश्मीर की आवाम मतदान करने घरों से बाहर निकली है।